Hello, my little learners. This is Anjana, your maths trainer, and we are going to start with grade 6 new chapter. Chapter number 6. What is the name of the chapter? It is integers. So, shall we begin with the warm-up first? Here we have a warm-up. You are going to write the reverse words for these given words. तो forward का reverse क्या होता है? Backward. Very good. Let's write backward. And we have far away. Anything which is far. इसका opposite क्या होगा? Close. Now we'll write opposite of internal. That is external. Good going. And bottom. That is top. So we write top here. Opposite of increase. Decrease. And opposite of under is above. We come to ascend. Ascend means बढ़ना. तो ascend का opposite क्या होगा? Descend. Then we have victory. Victory का meaning होता है to win anything. And then opposite of victory is losing. Division. What is the opposite of division? Yes, it is multiplication. Now, come to minus. A set of negative numbers, positive numbers and zero together are called integers. And after this, 1 is the smallest positive integer, but minus 1 is the largest negative integer. And generally plus sign is not written before a positive sign. इसका मतलब जब हम integers की बात करते हैं तो सारे negative numbers, zero and positive numbers मिलकर set of integer बनाते हैं. And जो 1 होता है वो सबसे छोटा positive integer होता है क्योंकि 1 से छोटा 0 हो जाता है, right? और उससे सब छोटे छोटे वाले नेगेटिव नंबर्स. ऐसे ही -1 जो होता है वो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर होता है क्योंकि -2, -3, -4 जैसे जैसे हम उधर इंक्रीज करेंगे हमारा नंबर और छोटा होता चला जाएगा. Got it? Now we talk about what actually are integers. So children, we are already familiar with the properties of addition, subtraction, multiplication and division of whole numbers. And you know that when larger whole number is subtracted from the smaller one, the result is not a whole number. Suppose आपने 5 में से 6 को subtract करने की कोशिश की. अभी तक 6 में से तो 5 subtract किया है, but 5 में से 6 subtract कोशिश करेंगे तो वो possible ही नहीं होगा. So for that अब हमने एक नया concept add किया कि कुछ negative numbers भी होते हैं. Like here we are trying 11 minus 21. It's not a whole number. So we are adding, we are extending our learning कि natural numbers plus 0 मिलकर whole number बनते थे और अब इन whole numbers में और भी आगे पढ़ेंगे जिसमें सारे negative numbers भी आएंगे और वो पूरी family of numbers बन जाती है family of integers, जिसमें हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 0 होता है और ऑल नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं. ओके, तो अगर हम बात करते हैं, सपोज वी स्टार्ट फ्रॉम 0. सो इफ वी से 0 इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड व्हेन यू मूव 1 unit to the right means 1, and when you move 1 unit to the left that means -1. That means what is 1 and -1? They are opposite to each other, right? I'm drawing a number line here and this is the center. We write here 1, we write here -1. We write here 2, we write here -2. So we say that this 2 and -2 are at equal distance from point 0 and one is in the right direction, another is in the left direction. So they are opposite of each other. Now combining the negative numbers with whole numbers, we obtain a new collection of numbers which are called integers. और integers में क्या क्या आता है? All positive numbers, 0
और उससे भी छोटे नंबर्स जिन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव नंबर्स. गॉट इट? And we represent the family of integers by alphabet Z. So Z is this complete family जिसमें हमारे पास सब नेचुरल नंबर्स भी आएंगे, होल नंबर्स भी आएंगे और इंटीजर्स भी आएंगे, राइट? तो इंटीजर्स क्या हुआ? इंटीजर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स. सो हियर सी 1 plus 1 plus 2 plus 3 ये सारे नंबर्स हमारे पॉजिटिव नंबर्स हो गए and we write it as 1 2 3 4 up to infinity. Then we have minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 endlessly. This becomes negative integers and there comes a number 0. 0 ना तो पॉजिटिव नंबर होता है और ना ही नेगेटिव नंबर. Got it? Now in the real life also the idea of opposites are expressed with the help of negative numbers. जब आप लिफ्ट में जाते हैं, आपने देखा है जब आपकी ग्राउंड फ्लोर पे लिफ्ट होती है और लिफ्ट ऊपर जाती है तो +1 +2 +3, बट कभी आपकी लिफ्ट अगर बेसमेंट में जा रही है तो आप देखेंगे -1 -2 -3. So the same thing happens over here. Suppose you are taking 10 steps forward and this would be considered as +10. And instead you are taking 8 steps backward, so it will be considered as -8. Similarly, when you talk about temperature, temperature above 0 degree is considered as a positive temperature. And जहाँ पर आप हिल स्टेशंस पे जाते हैं और बहुत सर्दी होती है, आप बोलते हैं ओ टेम्परेचर इज -5 डिग्री, तो वहाँ पर आपका टेम्परेचर below 0 degree होता है and it is expressed in the negative integers. So the height, moreover when you talk about height above the sea level, that's represented in positive integer, and when you go below the sea level it is represented as negative integer. So now when you talk about some profit, when you talk about savings, depositing, increasing and moving forward, all these are positive values. but जब आप बात कर रहे हैं लॉस की, जैसे सेविंग का ऑपोजिट होता है स्पेंडिंग, when you talk about deposit, deposit का ऑपोजिट होता है withdrawal, increase का ऑपोजिट होता है decrease, moving forward का ऑपोजिट होता है moving backward. So all these things are considered as negative. Now we talk about representing integers on number line. तो यहाँ हमारा हमेशा सेंटर में 0 आता है. जैसे ही आप राइट मूव करेंगे तो +1 +2, यहाँ प्लस साइन हम नहीं लिखते, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स को नॉर्मल नंबर्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं. एंड जैसे ही आप लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 एंड इट गोज ऑन. यहाँ हमने मार्क किया है दिस इज +6 and this is -6 representing on the number line. We say -6 and +6 are opposite to each other and they are at equal distance from 0 but in opposite directions. Got it? Now we talk about comparing and ordering of integers. So there are some rules of comparing. And the very simple rule is the moment you move towards the right direction, आपका नंबर बड़ा होता जाएगा. एंड जैसे ही आप लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे आपका नंबर छोटा होता जाएगा. तो यहाँ कंपेयर करें, अगर 4 और 1 को कंपेयर कर रहे हैं, which number is on the left? 1. So 1 is smaller than 4. Similarly, if I compare 4 and 5. Now here 4 is on the left and 5 is on the right, so 4 is smaller than 5. अब हम आते हैं नेगेटिव नंबर्स का कंपैरिजन. रूल रिमेन सेम, नंबर लाइन पर आप जितना लेफ्ट मूव करेंगे आपका नंबर छोटा होता जाएगा. So if I compare this -23 and -2, so अगर हम -2 को यहाँ देख रहे हैं और -23 बहुत उधर होगा, that means that will be a smaller number than -2. Got it? And after this we say that 0 को हम लेते हैं.
0 से पॉजिटिव नंबर्स हमेशा बड़े होंगे और नेगेटिव नंबर्स हमेशा छोटे होंगे. गॉट इट? तो जैसे जैसे आप ऑब्जर्व करेंगे 0 के लेफ्ट में मूव कर रहे हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे. तो जो फर्स्ट रूल हमने पढ़ा था, मोर यू मूव टूवर्ड्स लेफ्ट द नंबर बिकम स्मॉलर. इसका मतलब अगर आप 0 और -2 को कंपेयर कर रहे हैं, so 0 is bigger. Right? Here we have compared -9 and 0. So -9 is smaller. If I compare -230 and 0, every time the negative number is smaller than 0. So -230 is smaller than 0. Got it? So we say that negative numbers, that is the number to the left of 0, are always smaller than 0. Got it? And the positive integers are greater than negative integers. अगर आपको एक पॉजिटिव इंटीजर दिया गया और एक नेगेटिव इंटीजर दिया गया 1 and -5, so every time पॉजिटिव इंटीजर आपके नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा. एंड वो कोई भी नंबर हो सकता है. देखो 8 और -100. So don't care for the number. Only see that this is a positive number, this is a negative number, and so 8 is bigger than -100. Interesting. Come to the next one. The greater the positive integer, the smaller is the corresponding its negative integer. अगर हम 100 और -100 को कंपेयर करते हैं तो हम देखेंगे कि -100 100 से स्मॉलर है, राइट? एंड हियर इफ a is bigger than b, then remember one thing, that -a will be smaller than -b. अगर मैंने बोला 5 2 से बड़ा है, that means -5 -2 से छोटा होगा. Got it? And this is what we will be using in our studies. Now we come to a new term which is absolute value of integer. Absolute value का मतलब होता है हम उसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं. नंबर क्या है, ना हम उसका पॉजिटिव देखेंगे ना हम उसका नेगेटिव देखेंगे. तो और उसको हम कैसे लिखते हैं, एक सिंबल होता है 2 बार्स ऐसे, इसके बीच में जब हम नंबर लिख रहे हैं तो वो आपका नंबर एब्सोल्यूट नंबर होगा. सो इफ आई हैव अ नंबर -7, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 7 होगी. इफ आई हैव अ नंबर 7, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 7 होगी, राइट? So this way we make the absolute of -7 is equal to 7, absolute of 16 is equal to 16. And what is absolute of 0? It is always 0. So my note says that the absolute value of positive number is the number itself, and absolute value of 0 is also 0, but absolute value of any negative number is its positive number. Every time we have to remember this. Got it? So we'll be doing examples here. The first example is use plus or minus to represent the following. So if it is above sea level, we'll say 100 meter above means it is a positive value. We write it as plus 100. If it is 350 meters below sea level, so below means it is a negative value. We write down minus 350 meters. And profit of rupees 850, that means plus 850, and loss of 200 means minus 200. Now insert the proper sign, greater, smaller or equal to in the boxes. आपको यहाँ कंपेयर करना है -10 और 5. I told you कि नेगेटिव नंबर हमेशा छोटा होता है, so we put the sign like this. And if you have -6 and -8, so here -8 is smaller. बिकॉज इन नेगेटिव जैसे ही आपका नंबर छोटा होगा उसकी नेगेटिव वैल्यू बड़ी हो जाएगी. -7 and -9, so -7 is greater, and when negative and 0 is compared, so negative number is smaller than 0. Got it? Then we write the absolute value. -18 की absolute value 18 होगी, but 34 की absolute value 34 होगी. Got it? And when you have -65, its absolute value is positive 65. Now we will be using number line and arrange these numbers in the ascending order. सबसे पहले हमने 0 मार्क किया. Then we go to -5. -5 is here. Then we have 8. We mark 8 here, and we mark -4. It comes here, and -9 goes here.
अब हमने ऑब्जर्व किया कि सबसे छोटा नंबर -9 है. We write down -9, then -5 comes here, then we have -4, we write 0, and in सब numbers में largest number हमें मिल गया 8. So this is how we write the numbers, and we can put the sign also in between. Got it? And after that we have to arrange the numbers in ascending order. तो हमने यहाँ ऑब्जर्व किया कि -30 सबसे छोटा है, उसके बाद -14, then we get -8, then 6, and 12. Got it? And the next question is to arrange the numbers in descending order. Descending order का मतलब हम सबसे बड़ा नंबर पहले लिखेंगे. तो इन सब नंबर्स में ये दो नंबर पॉजिटिव हैं जो पहले आएंगे. 35 और 16 में कौन सा नंबर बड़ा है? 35. We write 35, then 16. And in numbers में 18 negative will come, then we write -25, and then comes -34 जो सबसे छोटा नंबर है. तो यहाँ हमने ऑब्जर्व किया this is negative number, so it becomes the smallest. Got it? Now we'll be doing true and false. -1 is the smallest negative number. It is false. -1 is the largest negative number. And 0 is a positive number. Again it is false because 0 ना तो positive number है ना ही negative number है. -40 is to the right of -20. नंबर जितना छोटा होता है वो उतना लेफ्ट में होता है, and -40 -20 से छोटा है. So again it is a false statement. A positive integer is always greater than a negative integer. Yes, this is a true statement. And every integer is less than every natural number. That means कि हर integer natural number से छोटा होता है, which is a false statement. Now plus or minus use करना है इनको represent करने के लिए. So 20 step forward is +20. Profit of 85 is +85. And here you have 150 below the sea level. We write down 1 minus 150 meters, and loss of ₹500 is represented by minus sign. Bought 2 dozen bananas. Bought मतलब आपके पास stock में increase हुआ, so we write down +24 bananas. Now why 24? Because it's 2 dozen, and 2 dozen का मतलब 2 times 12, which is 24. Consume 2 liters of juice. So we have taken 2 liters of juice. So we write down +2 liters. Come to the next question. Here you have to write the absolute value. Absolute value में हमेशा ध्यान रखना है अगर माइनस का साइन है तो वो रिमूव हो जाएगा. So absolute of -200 is 200. Absolute of 45 is 45. Similarly, this remains 89, and this becomes 134. Got it? Now let's move further. You have to write the integers between the given numbers. आपको दो numbers दिए हैं, उनके बीच में कौन कौन से integers आने हैं. The first one I am going to do for you, -3 and 5. तो -3 से बड़ा हुआ -2, then -1, 0, 1, 2, 3, and 4. Right? We are not going to write -3, and we will not write 5. So -3 और 5 के बीच में हमें ये numbers. Got it? Now similarly we have this part will do. -20 से बड़ा -19, -18, -17, -16, -15, and -14. We will not take -20, and we will not count -13 here. तो इन दोनों के बीच में हमें ये numbers मिलते हैं. Got it? Now do other parts yourself. Identify the smallest integer. तो यहाँ negative -139. देखो negative का -139 सबसे छोटा होगा. Got it? And over here, which is the smallest one, -54. And here, which is the smallest one,
This is minus 15. And can you help me to get the smallest here? Minus 121. Beautiful. Now arranging in ascending and descending order. हमने जैसे example किए थे, आप इन questions को करेंगे and we come to addition of integers. So first thing is sum of two positive integers. So if we are adding plus 3 and plus 2, हमने क्या करना है? 0 से start किया. First time हमने 3 steps का jump लिया, फिर 2 steps का jump लिया और हम पहुंच गए 5 पर. तो हमारा आंसर मिल गया plus 5. So the sum of two positive integers is the sum of their absolute values with a positive sign. Now when you add two negative integers, minus 2 और minus 3 को add किया, starting from 0, first time हमने 2 steps left, फिर 3 और step left, हम पहुंच गए minus 5 पे. So what do you get? We reach minus 5 and we conclude that sum of two negative integers is the sum of their absolute values with a negative sign. Then we come to sum of two integers with opposite sign. ये हमारी third category की question है. So to add minus 4 and plus 2 on the number line, सबसे पहले 0 से पहुंचे minus 4 पर and that is on the left side. अब minus 4 से हमने movement किया 2 steps which will be on the right side and we got the answer as minus 2. And similarly to add plus 2 and minus 5. So what will you do? Here you are going to start from 0 and you'll move 2 places to the right and then we are going to move 5 places to the left and the answer we get is minus 3. So this becomes minus 3. Got it? तो यहाँ से हमारा 5 step jump हुआ. पहले हमने 2 step इधर jump किया और 5 step on the left jump करके हमें मिला minus 3. So that means the sum of two integers having opposite sign is the difference of the numbers. यहाँ पर हमने 2 और 4 का difference लिया और जिसकी negative value ज़्यादा है, we are going to put the sign of integer with the greater absolute value. That becomes your answer. Got it? Now we have to do these questions at the following. So first time we are adding plus 32 and plus 45. Both are positive numbers. We add them, we get 68. Similarly, when you add two positive numbers, you are only adding them and you get the sum. Now here we have two negative numbers. हमने इन दोनों को ऐड किया, हमें मिला minus 225. Got it? And then here we have one positive and one negative number. हमने इन दोनों का difference निकाला और observe किया कि negative 145 की absolute value ज़्यादा है. So your answer becomes a negative number. Got it? Now let's move further. We come to different properties of integers. Now we are going to learn about the properties of addition of integers. So we have a closure property, commutative property and associative property which hold good for addition of integers. सबसे पहले start करते हैं closure property. If we have two integers a and b, तो उनका जो sum होगा वो भी हमेशा एक integer ही होगा. So let's take minus 5 and 8. Minus 5 and 8 are integer. इनको add किया, हमें मिला number 3, which is also integer. Coming to commutative property. So if a and b are two integers, हमेशा याद रखेंगे कि a plus b and b plus a दोनों हमेशा same रहेंगे. हमने दो numbers दिए यहाँ पर minus 4 and 7. एक बार हमने minus 4 और 7 को add किया, हमें 3 मिला. नेक्स्ट टाइम हमने 7 plus minus 4 किया and we got the same answer. Let's try it with two negative numbers. minus 6 और minus 8 को add किया, we got minus 14. और next time 8 और minus 6 को add किया, we got the same answer. And the same thing holds true for associative property. Associative property में हम 3 numbers लेते हैं a, b and c और हम उनके regroup करते हैं. कोई भी नंबर पहले 2 ऐड किए और थर्ड नंबर बाद में ऐड किए और हमें आंसर
हमेशा सेम मिलेगा। तो a प्लस b प्लस c किया और नेक्स्ट टाइम क्या किया हमने, पहले a और b को प्लस किया और उसके बाद उसमें c ऐड किया एंड वी गॉट द सेम आंसर। यहाँ हमने 3 नंबर्स लिए -3, -5 एंड -6। तो पहले -5 प्लस 6 किया, वी गेट 1 here और यहाँ -3 प्लस 1 बन गया 2। नेक्स्ट टाइम -3 और -5 को ऐड किया, मिला -8 and +6 किया, so again we get 2. So in both the cases we get 2. Coming to identity property. Identity property क्या होती है? एक नंबर है 0, अगर हमने उस 0 को किसी भी इंटीजर में ऐड किया तो आपका नंबर चेंज नहीं होगा, and that's called identity element. And because we are talking about addition, so this is called additive identity element. So that means if 0 is added to any number, the result remains unchanged. Got it? And coming to additive inverse. Additive inverse क्या होता है कि suppose हमारे पास एक नंबर है a which is integer, a में हमने -a को ऐड किया तो हमें रिजल्ट मिल गया 0. That means a और -a दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं and we call them additive inverse of each other. That means the sum of two integers with equal absolute values and opposite sign is always equal to 0. तो हमने अगर -6 और +6 को ऐड किया तो क्या आएगा 0, और -20 और +20 को ऐड किया अगेन वी गेट 0. तो एक सेम नेगेटिव नंबर और सेम पॉजिटिव नंबर, चाहे वो जितना भी छोटा हो जितना भी बड़ा हो, उनको ऐड करेंगे वी गेट 0. नाउ लेट्स डू दीज सम्स. सो हियर वी हैव 3 नंबर्स, वी हैव टू ऐड देम. सबसे पहले हमने 632 लिखा प्लस -232 and plus -430. So here we are going to add these two numbers. इनको ऐड करके 400 मिला and plus 430 we get 830. Got it? Now let's try another one. Here we are going to regroup. जो नेगेटिव नंबर्स हैं हमने उनको एक साथ लिया और जो पॉजिटिव नंबर्स हैं 42, 8 and 46 हमने उनको एक साथ लिया. एंड फाइनली इन तीनों नेगेटिव नंबर्स को ऐड किया, वी गेट -121 एंड इन तीनों पॉजिटिव नंबर्स को ऐड किया, वी गेट +86 एंड द आंसर बिकम्स -35. गॉट इट? नाउ वी कम एट सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर. So subtracting an integer is same as adding integer to its additive inverse. तो अगर हमारे पास a और b कोई भी दो इंटीजर है तो a minus b का मतलब होता है a plus additive inverse of b. Let's try doing it. We are going to find -1 is to be subtracted from 6. What do you get? 6 minus +1, right? तो हमने क्या किया, 1 का एडिटिव इनवर्स लिखा और वहां पर उसका डिफरेंस निकाला तो हमने लिखा 6 plus -1. Got it? And we get 5. Similarly हमने करना है 7 minus +4. तो +4 का एडिटिव इनवर्स होता है -4 और ये माइनस साइन बन गया प्लस में. So 7 minus 4 becomes 3. Now let's take the example. Find the difference of 4 minus +3. So 4 minus 1 3 will be written as +3 will be written as 4 plus -3 and the answer becomes 1. Got it? Let's take more bigger example. -8 plus 57 and minus of -19 plus minus of 20. So what will happen? कि -8 as it is रहेगा, plus 57 as it is रहेगा और माइनस ऑफ -19 बन जाएगा +19. ऐसे ही ये -20 यहाँ पर आया. अब हमने क्या करना है, सारे नेगेटिव नंबर्स को एक साथ लेंगे तो -8 और -20 एक साथ आ गए और पॉजिटिव नंबर्स दैट इज 57 और +19 एक साथ आ गए तो हमें आंसर मिल गया. दिस इज -28 and this is +76 and your answer becomes 48, right?
Now we learn about properties of subtraction of integers. So some properties of subtraction of integers are different from the properties of subtraction of whole numbers because of the introduction of negative numbers. So let's see how. We'll talk about closure property, that if a and b are any two integers, then the closure property is true. A minus b is equal to c. C is always an integer. So अगर मैंने अभी तक ये पढ़ा था कि 3 minus 4 नहीं हो सकता, but now 3 minus 4 is minus 1. So we say that it is an integer. Again, 4 minus of minus 6. This is 10, which is again integer. So closure property does not hold good for subtraction of whole numbers, but it holds good for the subtraction of integers. Talking about commutative property, here if a and b are two integers, then remember a minus b is not equal to b minus c. But there is one condition. When a and b are equal, suppose 5 minus 5 कर रहे हैं, then obviously it is equal to 5 minus 5 and that comes out 0. Got it? Coming to associative property, associative property भी हमारी true नहीं होगी for integers. तो इसका मतलब regrouping is not possible. अगर हमारे पास a, b, c 3 integers हैं, then a minus b minus c is not same as a minus b minus c. यहाँ पर दोनों cases में हमें different answer मिलेगा. What is identity? Identity means अगर a कोई integer है तो a minus 0 is always equal to a. That means if you subtract 0 from any integer, the answer remains same. Correct? And in whole numbers, 0 minus a is not defined. लेकिन यहाँ पर 0 minus a हमेशा minus a की जगह आएगा. Suppose मैंने लिखा 0 minus 12. Your answer will be minus 12, which is an integer. 0 minus of minus 10. Now we have got two minus signs, so it becomes a positive number and it is a true statement. Now coming to true and false, the statement is the sum of two negative integers is always positive. This is a false statement because two negative integers का sum हमेशा negative आएगा and the sum of two positive integers is always positive. This is a true statement. The sum of two integers is not always an integer. It is a false statement because for integers, अगर दो integers को आप add कर रहे हैं, answer will always be integer. And the commutative property states that if a and b are any two integers, then a plus b is equal to b plus a. जल्दी बताएं ये ठीक है या नहीं? Yes, this is a true statement. But a, b and c are three integers, then associative property is not true for the subtraction. तो यहाँ हम लिखेंगे false. अब number line पर ये draw करना, add करना, I want you to try it yourself. हमने इस तरह के बहुत सारे questions किए, आप इनको try करेंगे and you will enjoy doing them क्योंकि अब आपको सारे concepts clear हैं. Still, if you have doubt, watch the video again and you will be happy learning them. Stay connected. Stay tuned for the next video. God bless you.